Okay, the next topic is DNA sequencing. DNA is polynucleotides and it has two strands. Sequencing is the technique by which we are understanding the nucleotides on each strand. Okay, so once you get one strand, you take complementary of that and you can find the second strand. That means अगर आप इसमें से कोई भी एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो दूसरा स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा by taking its complementary. Now let us see what strategies followed for this and how this is being achieved. One of the important techniques are given, that is the technique put forward by Frederick Sanger. And this technique is known as chain termination method. It is also known as Dideoxy chain termination method. Dideoxy nucleotide chain termination method. Sanger is not only the scientist who has come with the sequencing technique. There are many scientists put forward various techniques. Another is Maxam and Gilbert. They have another technique which is known as chemical degradation of DNA. Chemical degradation method. So today we are going to discuss Sanger's dideoxy chain termination method of DNA sequencing. Now, this is one of the most popularized technique of DNA sequencing. And how do he achieve this technique? He created a special nucleotide which are dideoxy nucleotides. That means dideoxy ATP, dideoxy GTP, dideoxy CTP and dideoxy TTP. Okay, dideoxy A, dideoxy G, dideoxy C and dideoxy T. The chemical difference between normal these and dideoxy nucleotides are, DNA or the nucleotides are having a sugar, that is pentose sugar. They are deoxyribose, to which a nitrogen base is added. This nitrogen base it could be A, G, C or T, and in the 5' end they have a phosphate. This is the structure of deoxyribose nucleotides. They are known as deoxyribose because they have only hydrogen at second carbon. This is a second carbon and they have only hydrogen here. Normal ribose have OH group here, but whereas this particular deoxyribonucleotides are having only oxygen here. That means one oxygen less. But dideoxy is
on 3 prime, there is 3 third carbon. Deoxyribose has OH here, but if it is dideoxy, this oxygen is also removed. When this oxygen is removed at the process of DNA polymerization, new strand of DNA when they synthesize, a new nucleotide is added to this end. That means one nucleotide, the another nucleotides phosphate and is forming bond phosphodiester bond. Diester bond with this OH group. Now if you remove this oxygen from here, no further phosphodiester bonds are formed on the 3 prime end of this nucleotide. Okay, if you make A, G, C, T dideoxy, once any of this nucleotide is added to a growing chain of DNA, further DNA synthesis or polymerization get stopped. This is actually the trick or the technique, or this is what the science behind Sanger's dideoxy chain termination method of DNA sequencing. Now let us see how this is done practically and what are the requirements for this. At first we require DNA which is to be sequenced. We need DNA which is to be sequenced. This DNA should be in single stranded form. We should have single strands of that. We should have many copies of this, and of course we need a DNA polymerase. We need DNTPs. We need DNTPs, and we need primer. So these are the major requirements for doing dideoxy chain termination method. Sanger took 4 different vessels, tubes, and he added DNA to be sequenced in single strand form, DNTPs, that means A, G, T and C to all these vessels, added primer, added polymerase, and he added DNTPs also in this. To the first one he added DD ATP, to second he added only DD GTP, to third he added DD C, and to the fourth he added only DDT. So basically इन सब में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर AGTC सभी में है, DNA templates है, and difference is फर्स्ट वेसल में DDA है, सेकेंड में DDG है, और थर्ड में DDC है, और फोर्थ में DDT है. These DNTPs are added in very less quantity, somewhere around 1%. That means पहला वेसल लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा ATP होंगे, सम अमाउंट ऑफ DD ATP होगा. सेकेंड में देखेंगे तो AGTC सब है, और उसमें G नॉर्मल G बहुत है और DDG बहुत कम है. थर्ड में AGTC पूरा है, नॉर्मल C बहुत है बट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ DDC है. फाइनल में AGTC बहुत है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ DDT है, एंड मेजर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ DD नॉर्मल T है.
Now these all tubes are kept for allowed for the DNA polymerization. Let us take first one which contain DD ATP. What happens here is the template strand is here, and suppose this is 3' end and this is 5' end of that. The primer will attach on the next side, and the polymerase will be able to add nucleotides here, okay, by seeing the complementary bases. Suppose this is a thymine, here it is thymine. What actually happens here, when the polymerase reaches here to that opposite, it requires A. There are two possibilities. Normal DNTPs का A भी है, तो उसमें नॉर्मल A भी है और DNTP भी है, इनमें से कोई भी एक लेंगे. सपोज नॉर्मल A लिया तो ये चेन आगे बढ़ेंगे, बट इन अनदर कॉपी ऑफ द टेम्पलेट यहाँ उन्होंने DDA ले लिया. DDA ले लिया तो इसके आगे चेन जाएगा, ये न्यू स्ट्रैंड यहाँ सिंथेसिस रोक देंगे. लाइकवाइज इफ़ यू टेक, यहाँ पे अगर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, सो उसमें कई डिफरेंट साइज का नया स्टैंड बनेंगे, क्योंकि ए स्टैंड का साइज़ क्या है, हु डिटरमाइंस द साइज एट विच टाइम द DDATP इज एडेड. सपोज इसमें 10 जगह पे T है, ओके, सो नया जो स्टैंड है एक इधर रुका होगा, किसी दूसरे में इधर रुकेंगे, मतलब सेकंड टी में, थर्ड वाला थर्ड टी में रुकेंगे, फोर्थ वाला फोर्थ टी में, ऐसे लाइकवाइज वी विल गेट 10 डिफरेंट साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स हियर, 10 डिफरेंट साइज न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड्स मिलेंगे, ठीक है. बट एक चीज़ आप ध्यान में रखो, इन सब के एंडिंग क्या होगा, ये जो नए सिंथेसाइज किया, ऑल दीज नए न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA के एंड में DDATP होंगे, ये तभी तो स्टैंड रुकेगा. दैट मीन्स ये भी DDATP है, ये भी DDATP है, ये भी DDATP है. सो लाइकवाइज इफ यू टेक ऑल द डिफरेंट वेसल सेपरेटली, हर वेसल में देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट साइज फ्रैगमेंट्स फॉर्म. इसमें भी बनेगा, तीसरे में बनेगा, फोर्थ में बनेगा. एंड पहले वाला जो वेसल है उसके अंदर सारे A में रुकेंगे, सेकेंड वाला G में रुकेंगे, थर्ड वाला C में रुकेंगे और फोर्थ वाला T में रुकेंगे. नाउ वी नो ओनली दिस. अब हमें इसमें से नया सीक्वेंस कैसे मिलेंगे, लेट अस सी. वो Sanger done is he has separated all these newly formed fragments on a agarose gel electrophoresis, and पहला वेसल जो ट्यूब का पेंड ऑफ ट्यूब का A वाला इसमें पहले वेसल वेल में डाला, G सेकेंड में, C is on third and T is on the fourth, and he separated the DNA fragment based on their size. You know, based on the size DNA strands get separated. Okay, now we know the DNA which is moved maximum, the fragment which moved maximum, that is the smallest one. That means we can say प्लस से माइनस तक जाएंगे तो DNA का साइज इंक्रीज होते जा रहे हैं.
सो ये सबसे छोटा फ्रैगमेंट का मतलब क्या है, जब टेम्पलेट स्टैंड से डीएनए सिंथेसाइज हुआ स्टार्टिंग में ही रुक गया। ओके, ये सबसे बड़ा वाला फ्रैगमेंट ये है। इसका मतलब ये फ्रैगमेंट उसके सिंथेसिस बहुत देर तक चला है। नाउ इफ़ यू रीड this gel from bottom to top, that means, for example, let us take this is A and the other one is C, the third one is G, and fourth is A, fifth is T, sixth is C, seventh is G, eighth is T, 9 is A, and 10th one is C. If I write like this, this is the sequence of newly formed DNA from 5 prime to 3 prime. वो कैसे? DNA सिंथेसिस जब शुरू हुआ, सपोज ये वाला A है, तो A में रुका ओके, द फ्रैगमेंट जो सबसे पहले रुका उसके ए वाले फ्रैगमेंट के ए वाले ट्यूब में है, तो दैट इज ए. नेक्स्ट सपोज दिस इज टी, द नेक्स्ट वन इज सपोज सी, then the next biggest fragment will be that which is stopped in G. G वाले में रुका होगा क्योंकि C के ऑपोजिट G है. लाइकवाइज अगर आप पूरा फ्रैगमेंट को साइज़ के हिसाब से सब अरेंज करेंगे, you will get the sequence of newly synthesized fragment from 5 prime to 3 prime. Okay, and you just take the complementary sequence of this. इसके complementary ले लो, C के complementary, A के, T के, G के, and that will give you the original sequence. Okay, देखते हैं इसके ओरिजिनल सीक्वेंस क्या होगा. ओरिजिनल सीक्वेंस होगा C के ऑपोजिट G, T, C, सॉरी A, C, G, A, T, C, G, T. इस साइड में 5 प्राइम होगा, दिस साइड 3 प्राइम होगा. दिस इज दिस साइड 5 प्राइम, दिस साइड 3 प्राइम. So this is Sanger's Dideoxy chain termination method of DNA sequencing. Now, after some time, after the discovery of this or invention of this technique, जब नए नए एडवांसमेंट आ गया तो इसमें एक मॉडिफिकेशन किया, दैट इज़ ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग. ऑटोमेटेड मतलब दिस इज जस्ट completely computerized. So the modification that in automated sequencing is हर DDA को उन्होंने एक फ्लोरेसेंट कलर से, सपोज ब्लू कलर से लेबल किया, DDG को ग्रीन कलर से, DDT को फॉर एग्जांपल रेड, एंड DDC को येलो. अब हमें 4 ट्यूब में करने की ज़रूरत नहीं, एक में ही करेंगे सारे प्रोसेस. दैट मीन्स you add template, DNA polymerase, DNTPs and 1% of DDNTPs. DDNTPs मतलब ये सब इसके अंदर डालेंगे and we'll do the sequencing or let the enzyme to synthesize new strand. फिर सारे फ्रैगमेंट्स को एक ई लेन में, एक पर्टिकुलर जेल के एक सिंगल वेल में सेपरेट करेंगे. Okay, now
इसका रीडिंग करेंगे बेस्ड ऑन और विद द हेल्प ऑफ ए डिटेक्टर प्रॉब। इस डिटेक्टर में एक यूवी लाइट होगा। जब यूवी लाइट पड़ेगा इसके ऊपर, इन सब में जो फ्लोरेसेंस है वो पता चल जाएगा। पहले में जब यूवी लाइट पड़ेगा, अगर वो फ्लोरेसेंट ब्लू है तो ब्लू कलर मिलेगा, लाइक वाइज विल गेट। एंड विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर डिटेक्टर, एक प्रॉब से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कलर आइडेंटिफाई करेंगे। कलर आइडेंटिफाई करके आपको कंप्यूटर में उसके सीक्वेंस मिल जाएगा। आजकल AGTC कलर में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द automated sequencing is being done. Okay, thank you.